गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ProTalent एंड आई एम नितिन परमार। दोस्तों, आपका स्वागत है आज के हमारे इस इंग्लिश ग्रामर के सेशन के अंदर। इंग्लिश का ये IIM IPM के लिए 5वां सेशन है, बट द स्टूडेंट्स हु आर लुकिंग फॉर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन नाउ दे कैन ज्वाइन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल बिकॉज दिस मॉड्यूल विल गो ऑन फॉर नेक्स्ट 5 to 7 सेशंस वेयर आई एम गोइंग टू कवर इंपॉर्टेंट ग्रामर रिलेटेड कंसेप्ट्स। दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है, काफी सिंपल से रूल्स है, एंड आई बिलीव बाय डूइंग दिस काइंड ऑफ रूल्स विथ मी यू विल बी इन अ पोजीशन टू डू वेल इन योर एग्जाम। ओके, ठीक है, चलिए ग्रेट। तो दोस्तों, आज है ना हमारा ग्रामर का सेशन चालू करने से पहले सबसे पहले तो हम अटेंडेंस ले लेंगे। ये सुनो, मैं आपका स्वागत है, वेदांत आपका स्वागत है। चलिए सब लोग अपनी फटाफट अटेंडेंस दे दीजिए, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, नाउ एट द सेम टाइम, ठीक है, बिफोर आई स्टार्ट द ग्रामर सेशन I'm going to take a quick quiz on cryptocurrency. Let me check how much do you know in the world of cryptocurrency. ठीक है, आपको कितना पता है वो जानने की कोशिश करेंगे। ये सुनो, I'm going to ask you 6 questions. ठीक है, I'm going to ask you 6 questions and let's see how many of you are able to answer this. Okay, ठीक है, I hope it is very clear. Hello Rutwa, hello Vaibhav, रचित, वंशी, ऋषिक, फरशाद, नील, दिशा, जिया, इशिता, जानवी, आप सबका स्वागत है दोस्तों। हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आर यू रेडी? टेल मी यस और नो दैट आर यू रेडी विद दिस 6 क्वेश्चंस। ठीक है, हेलो चांसी, हाउ आर यू डूइंग? ठीक है, चलिए, आर यू रेडी फॉर द 6 क्वेश्चंस ऑन क्रिप्टो करेंसी, द लेटेस्ट नॉलेज अवेलेबल टू यू, एंड लेट मी चेक कि आपके पास वो नई जानकारी है कि नहीं। हेलो दिया, हाउ आर यू डूइंग? ठीक है, चलिए बताइए, आर यू गाइज रेडी? यस, दिया सेज यस, शी इज रेडी। ग्रेट, सब लोग बताइए, आर यू रेडी और नॉट? लेट मी चेक कि आपका नॉलेज कैसा है। यस, जिया सेज मे बी, वैभव सेज यस। ठीक है, चलिए ग्रेट, लेट मी स्टार्ट हियर। दिस इज अ फर्स्ट क्वेश्चन। What is the smallest unit of Ether, the cryptocurrency coin used on Ethereum network? I'm sure all of you are really aware about this cryptocurrency like Bitcoin, Ethereum, ठीक है, Dogecoin and so on and so forth. जैसे रुपीस का स्मॉलेस्ट यूनिट पैसा होता है, ठीक है, वैसे ही इथेरियम का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? That's a question. I'm going to give you 30 seconds. Please tell me fast what is the answer. ठीक है, very interesting question. ठीक है, people should be in a position to answer this question ASAP. जितना जल्दी दे सको उतना अच्छी बात है। ठीक है, I'm going to give you 30 seconds. ठीक है, इशिता says very, ठीक है, great. So I think people have, you can say, 4G connection ready with them, and that's right. And answer is Y. ठीक है, so Y is the smallest denomination of ether. 1 ether is equal to 10 to the power 18 Y. Okay, is that comfortable? Good. ठीक है, so that's wonderful. This is 10 to the power 18. Okay, that's what the answer is. ठीक है, चलिए, tell me, in which year was the genesis of a block of a Bitcoin created? I'm sure all of you are aware that the Bitcoin is cryptocurrency which works on a blockchain technology. तो blockchain technology का पहला ब्लॉक Bitcoin के लिए कौन से साल में बनाया गया था? ओके, कौन से साल में बनाया गया था? I'm giving you 30 seconds. Let's see how well you are able to give me the answer. ठीक है, in which year was the genesis of block of Bitcoin created? Hello Janam, how are you doing? ठीक है, चलिए फटाफट। Ishita says it is in 2009. Oh, now this is easy. Okay, so Bitcoin was released by Satoshi Nakamoto. ठीक है, so that is a creator of Bitcoin. He took a pseudonym called Satoshi Nakamoto. We don't know who is that guy. They published it in 2008. ठीक है, पर Bitcoin was started on January 3, 2009. So that's a genesis, that's a minting of cryptocurrency called Bitcoin. That's a birth date of, you can say,
cryptocurrency. This is how you can possibly, you can say, keep in mind. Okay, ठीक है, चलिए, great, that's a wonderful thing. I'm happy that many of you are able to give me answer. ठीक है, now whether you are giving answer by searching on Google or whatever, I'm happy that you are doing it. At least you are gaining knowledge. You are having this advanced level knowledge, which is important. ठीक है, something which is happening in the world, we should be aware about it, and you are aware about it. I am happy you are able to have an interest towards it. ठीक है, that's good, that's wonderful. ठीक है, question number 3. In terms of self-declared crypto wealth, who is believed to be the richest person currently? ठीक है, अभी सबसे अमीर कौन है भैया, जिसका नेटवर्थ $95 billion, ठीक है, which is entering into world's top billionaire की रैंक में ये भाई साहब पहुंच चुके हैं. Who is this guy? Let me show this person. This is the person. ठीक है, ये भाई साहब है जो again से वर्ल्ड्स रिचेस्ट पीपल में घुस चुके हैं. ठीक है, एंट्री कर चुके हैं. ठीक है, he has lot of wealth coming from cryptocurrency. Okay, so who is this guy? Tell me what is the name of the person. ठीक है, interesting one. Okay, interesting one. Please tell me. Okay, Mayank says जाओ 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 जाओ, कहाँ का जाओ. Okay, ठीक है, Changpeng Zhao. Okay, great. It is Changpeng Zhao, which is CZ is popularly known as. He runs a cryptocurrency exchange called Binance. ठीक है, he is running this Binance. ठीक है, okay, और वहां से he is getting into the richest people का, you can say, ranking. Okay, ठीक है, recently you can say his net worth was estimated at some around 96.5 billion US dollar, which is huge, which is large, wonderful stuff. ठीक है, चलिए, great. What is the official name of the latest upgrade in the Ethereum which was released last year? ठीक है, I'm sure many of you are going to commit mistake here. ठीक है, I'm sure you are going to put a wrong answer because your search, ठीक है, is just limited to Google, so possibly it is going to give you wrong answer. ठीक है, so what is the official name of the latest upgrade in Ethereum which was released last year? Last year ये रिलीज हुआ था Ethereum का. ठीक है, and thereby you can say this upgrade had a specific name. What is the name? Tell me fast. What is the official name of the latest upgrade called Ethereum which was released in the last year? Okay, so people are not able to search it. ठीक है, कोई नहीं. I'm at least happy that you guys are trying. Okay, ठीक है. So what is the answer? I'm still waiting for 30 more seconds. The Beacon chain, Krish's ENS. Okay, ठीक है, चलिए. The answer is Ethereum Improvement Proposal 1559. Okay, some of them popularly says that it is ETH2, or some of them popularly says that Ethereum 2.0. This is how they say, but the real name is Ethereum Improvement Proposal 1559. Okay, great. Crypto has been called a revolution as it is not in the control of centralized entity. So central bank इसको कंट्रोल नहीं करता है. ठीक है, so इसकी वजह से एक वर्ड निकलता है that crypto assets are known as DeFi. Okay, they are known as DeFi. Okay, what is DeFi? What is DeFi? You have to expand. What is the meaning of DeFi? Okay, so cryptos are called revolutions. ठीक है, they are not
you can say in the control of centralized entity like RBI or any other central bank. ठीक है, so that way it is known as DeFi. What is the full form of DeFi? Please tell me. Very good. I'm very happy. DeFi is known as decentralized finance. क्या बोलेंगे इसको? जैसे when we talk about fintech, what is the full form of fintech? Financial technology. So what is DeFi? It is called decentralized finance. Very good. ठीक है. It is known as decentralized finance. DeFi. ठीक है. You have to tell me this image is having very important connection, ठीक है, with you can say your blockchain technology, cryptocurrency world, ठीक है. So this image, ठीक है, has lot of connection with cryptocurrency. This image has some, you can say, very crucial connection, ठीक है, to this blockchain technology. What is this? What is this image all about? What is the name of this image? ठीक है, what is the significance of this image? ठीक है, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, जो इमेज आपको दिख रहा है, what is the significance of this image? It has a connection to cryptocurrency, blockchain technology, ठीक है, और उसके साथ ये connected है. Please tell me what is this? What is the name of the image? Which year we are talking about? Where is it connected? You may possibly give any answer connected to this. I will take it. ठीक है? If it is connected to this, I will definitely take it. It is not metaverse. This is not metaverse. Connected to cryptocurrency. This is not connected to metaverse. सर क्या बात कर रहे हो, आपने तो टॉपिक लिखा है ग्रामर, आप पढ़ा रहे हो क्रिप्टो करेंसी. अरे पढ़ाने दो भैया, क्रिप्टो करेंसी की दुनिया चल रही है, तो वी शुड नो ऑल अबाउट दिस. What is this all about? What is the image connected? Now the problem with this question is you can't search the image. गूगल वाले ने अगर इमेज सर्च करने का बोला होता तो भी आप शायद सर्च कर पाते, ये सुनो, पर आप क्या करें, है ना, क्या करें, इमेज सर्च नहीं कर सकते. बाकी 5 के 5 क्वेश्चन के आंसर आप लोगों ने दे दिए, ये सुनो, ये आप फंस चुके. कोई नहीं, दैट्स ओके. क्रिस जैन, व्हाट इज इट? सो दोस्तों, द आंसर टू दिस इज, yeah, yes, I know Google Lens is there, है ना, you can search it, try out Chris Jain, ठीक है, आपके पास Google Lens है, ट्राई करिए. I'm very happy कि मतलब you guys are technologically advanced. I'm happy, at least you are not Luddite, okay, you are not technologically Luddite, ठीक है. What is the meaning of technological Luddites? Who are Luddites? Please tell me. जब तक क्रिस जैन गूगल लेंस में इसका मीनिंग ये फोटो डाल के ढूंढेगा, तब तक कोई बताएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लुडाइट्स? टेल मी. ओह इशिता, ग्रेट. दिस इज केविन मैकॉयस क्वांटम 2014. दिस इज क्वांटम, ठीक है, इसका नाम ही क्वांटम है. दिस इज द फर्स्ट NFT in the world, है ना, which is the first NFT, which is Sotheby is an auction firm. उसने पहला NFT auction किया था, which is Kevin McCoy's Quantum 2014. ठीक है, चलिए, ग्रेट. क्रिस जैन बोलते सर डाउनलोडेड नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. पीपल हैव अगेन से गॉट इट. इशिता कुड वर्क विथ इट. वंडरफुल इशिता, ठीक है. इशिता थोड़ा सा हमें भी ज्ञान दो, इतना जल्दी कैसे सर्च कर लिया, ठीक है. वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी, मजा आया दोस्तों. कीप इट अप, ठीक है, ऐसा करते रहिए. दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अस. दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू अगेन से अपग्रेड आवर नॉलेज.
ठीक है ना, वी आर गोइंग टू यू कैन से वर्क विद द वर्ल्ड, वी आर गोइंग टू एंश्योर दैट वी हैव अ गुड नॉलेज about the world around us. That's a very important part, because once we get such kind of knowledge, we are upgrading ourselves, we are getting ahead of large number of people. That's a game for us. Let's start with the grammar का पहला session. We talk about this grammar session number 1 is, जैसे आपने thumbnail पे देखा था, it is called subject verb agreement, but as I talk about, ठीक है, generally we have a specific you can say framework to apply. Remember, in a grammar part we have n number of questions may come up, ठीक है, and if I apply certain approach, ठीक है, कि मैं एक स्ट्रक्चर में चीजों को अप्लाई करूं, ठीक है, तो भैया मेरे लिए काम इजी बनेगा. आई विल बी इन अ पोजीशन टू रिमेंबर दिस स्ट्रक्चर बिकॉज दिस इज वेरी फोकस्ड, ठीक है, एंड देयर बाय आई विल बी इन अ पोजीशन टू लर्न सर्टन रूल्स रिलेटेड टू दिस. दैट्स नंबर 1, ठीक है. नंबर 2, यू कैन से आई कैन structurally apply. When I read a sentence, I first look at what subject verb agreement में है कि नहीं. That's the first thing I will check, ठीक है. अगर if I am able to do that, then I can find out कि okay, subject verb agreement की भूल नहीं है, ठीक है. So I'm going to you can say or together today we are going to learn about rules related to subject verb agreement, ठीक है. Then we are going to move towards pronoun. What is the rule for pronoun, ठीक है, and what is the rule for subject verb agreement. सब्जेक्ट और वर्ब अग्रीमेंट में होने चाहिए. इफ माई सब्जेक्ट इज सिंगुलर, ठीक है, देन माई वर्ब हैज टू बी सिंगुलर. यस और नो. इफ माई सब्जेक्ट इज प्लूरल, देन माई वर्ब हैज टू बी प्लूरल. Very simple thing. So there are rules related to that. I'm going to discuss that with you. ठीक है. Possibly with subject verb agreement rule, we are going to cover many rules related to pronoun. You will be in a position to do that well. Okay. So don't really worry about it. Then comes modifier. Now what is modifier? What does it modify? ठीक है. So दोस्तों modifier है ना, ऐसा होता है कि जो कोई भी सब्जेक्ट को, वर्ब को, ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करता है, ठीक है. एंड देन द रूल अबाउट मॉडिफायर इज व्हेनेवर अ मॉडिफायर कम्स, द मॉडिफायर शुड कम द नियरेस्ट टू द थिंग इट मॉडिफाइज, है ना. फॉर एग्जांपल लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, है ना, ठीक है. फॉर एग्जांपल दिस इज अ मॉडिफायर. क्या बोला था, है ना. दिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑल्सो. ऑल्दो कवर्ड इन about 11 inches of snow, the aviation official said that the conditions on the runway at the time of emergency landing was acceptable. Okay, although it was covered in 11 inches of snow. Now what was covered in 11 inches of snow? That is a modifier. Okay, what was covered? Whether the aviation officials were covered or the runway was covered. What was covered? Obviously, runway. You can't cover the aviation official in 11 inches of snow. 11 inches of snow is there on the runway. ठीक है. So क्या बोलेंगे? Although covered in the 11 inches of snow, the runway. So aviation official नहीं हो सकता. Runway conditions. Runway condition 11 inches of snow में नहीं है. Runway is in. So this is also not right. According to aviation official नहीं चलेगा. Runway was in acceptable condition during the emergency landing according to aviation official. This is appropriate. Aviation official नहीं चलेगा. Answer is 4. Is this comfortable to everyone? Easy था, बहुत easy था. That's a rule about modifier. Modifier जिस चीज को modify करता है उस चीज के एकदम नजदीक आएगा. Okay, I hope it is very clear. ठीक है. Remember, once you know structure, if you follow this, believe me, it is going to be a game changer. ठीक है. ग्रामर में I know large number of people in the country, ठीक है, randomly सभी तरीके के रूल पढ़ते रहते हैं, ठीक है, which is wrong. ठीक है. You must look at few limited thing, ठीक है, जो मैं आपके सामने लेकर आया हूं, ठीक है, that is out of you can say last so many years के papers in varieties of the entrance examination primarily for BBA, NPAT, IIM, IPM और उनके ग्रामर के क्वेश्चंस में क्या आता है मैं वही आपके लिए लेकर आया हूं. ठीक है. It is not a random thing. Okay, it is well curated, well researched thing is there in front of you. ठीक है. Make sure that you apply all these fundamentals in your mind. ठीक है. Make sure you learn it. ठीक है. Then comes parallelism. Now what is parallelism?
पैरेललिज्म हमने सीखा था दैट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट मोर देन वन सब्जेक्ट, ठीक है, देन यू यूज दो सब्जेक्ट्स इन अ सेम पैरेलल, ठीक है. व्हेन यू यूज मोर देन वन वर्ब, यू यूज द वर्ब इन द सेम पैरेलल. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, ठीक है. ओके, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. द आर्ट ऑफ मिकेलेंजेलो, the inventions of Edison and Shakespeare's play all represent great achievements in human history. ठीक है. अब यहाँ पे तीन चीजों के बारे में बात करी. The art of Michelangelo, the inventions of Edison and Shakespeare's plays. अब आप देखिए सबका स्ट्रक्चर सेम नहीं है. एक जगह पे बोल दिया शेक्सपियर्स प्ले और दूसरी जगह पे बोला द आर्ट ऑफ मिकेलेंजेलो. या तो आप बोलो आर्ट ऑफ मिकेलेंजेलो एंड द प्लेस ऑफ शेक्सपियर तो चलेगा, या मिकेलेंजेलोस आर्ट एंड शेक्सपियर्स प्लेस तो चलेगा. यस और नो, इज दिस कंफर्टेबल? ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है. ठीक है, अच्छा तो अब हमें देखना पड़ेगा कि ये जो पहला है वो तो पक्का ही गलत है. ठीक है, अब ये बोलते हैं मिकेलेंजेलो, एडिसन, शेक्सपियर, ये तो पूरा आइडिया ही बदल देते हैं. वी हैव टू टॉक अबाउट आर्ट, इन्वेंशन एंड द प्ले ऑफ शेक्सपियर. ये गलत हो गया. यस और नो, ठीक है. नंबर 3 बोलता है ऑल ग्रेट अचीवमेंट्स इन द ह्यूमन हिस्ट्री आर रिप्रेजेंटेड बाय द आर्ट ऑफ मिकेलेंजेलो, द इन्वेंशन ऑफ एडिसन एंड द प्लेस ऑफ शेक्सपियर. है ना, पॉसिबल पॉसिबल. ठीक है, बट द प्रॉब्लम इज दिस ऑल रिप्रेजेंट द ग्रेट अचीवमेंट. ठीक है, ऑल ग्रेट अचीवमेंट आर नॉट दिस. ये पूरा मीनिंग बदल देता है. सो देयरफॉर दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट. इज दिस कंफर्टेबल? समझ आया आपको ये डिफरेंस? क्या बोला? ऑल ग्रेट अचीवमेंट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस. उल्टा बोला था कि आर्ट, इन्वेंशन एंड प्लेस all represent great achievement. So there are more great achievement, but at least this are तो there, है ना. तो ये तो गलत हो गया. The art of Michelangelo, the invention of Edison and the place of Shakespeare, बिल्कुल सही दिख रहा है. Yes or no? ठीक है. All represent, you can say, great achievements in the human history. ठीक है. Michelangelo's art, Edison's inventions and Shakespeare's play represent all great achievements. ठीक है, in the human history. ठीक है. सो बेसिकली यहां पे क्या हुआ? दे रिप्रेजेंट ऑल ग्रेट अचीवमेंट. ये भी गलत हो. ये पैरेललिज्म के मुताबिक बराबर था. ठीक है, पैरेललिज्म के मुताबिक ये बराबर था, बट दे रिप्रेजेंट ऑल, यू कैन से, ग्रेट अचीवमेंट ह्यूमन हिस्ट्री. नो, द वे वी रिमूव्ड नंबर 3 ऑन द सेम लाइन, वी आर रिमूविंग नंबर 5. सो बेटर आंसर वुड बी 4. ओके, आई होप इट इज वेरी क्लियर फ्रॉम अ पैरेललिज्म पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, 4 और 5 दोनों सही थे. 4 एंड 5 दोनों सही थे. ठीक है, बट यू नो grammar examiner is going to question your ability to understand not only one simple thing but trying to see the full meaning of the sentence. ठीक है, so here this is coming as a full meaning and I believe it is comfortable for you as an answer number 4. okay, ठीक है. Then comes comparison. ठीक है, so we talked about this comparison. Apples have to be compared with apples. Oranges have to be compared with oranges. This is crucial. ठीक है, apples have to be compared with apples. Oranges have to be compared with oranges. That means आप जिस चीज को compare करते हो वो same होनी चाहिए. ठीक है, so basically you are saying that he, मतलब for example, he is taller than her आएगा या she आएगा? बताइए क्या आना चाहिए? He is taller than her और she आएगा, क्या आना चाहिए? Please tell me. Please tell me what should be the answer. She. Very good. है ना. He is taller than her गलत है. Her is wrong. She आना चाहिए क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट था, है ना, that is subject is third person, है ना, you can say singular. Third person singular is used as a, you can say, subject form. ठीक है, not in an object form. Her is an object form. She is an subject form. So when it is she, that is right. So answer would be he is taller than she is. Okay. So let's take an example of, let's say, this is parallelism. I'm going to come up. Oh, I don't have a comparison का example, but ठीक है, I'm going to take up any which way comparison module in the, you can say, coming sessions. So that will not create any trouble. Idioms and phrases are important.
ठीक है. idioms and phrases have to be learned, have to be mastered. ठीक है. उसके लिए आपके कोर्स के अंदर, that is courses.protalentdigital.com के ऊपर we have already provided, you can say, videos related to idioms and phrases. Please go through them. Okay, I'm sure you know that there are at least 3 to 4 questions which are going to come from idioms and phrases in your entrance examination. ठीक है, you must master this. ठीक है, अगर आप इसको मास्टर नहीं करोगे, एग्जाम में छोटी छोटी गलतियों की वजह से दिक्कत हो जाएगी. ध्यान रखना, IIM IPM जैसी परीक्षा में इंग्लिश का कट ऑफ इज वेरी क्रूशियल. लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर एबल टू क्रैक कॉन्ट का कट ऑफ. इंग्लिश का कट ऑफ लोगों से क्लियर नहीं होता है बिकॉज दैट कट ऑफ इज वेरी हाई. ठीक है, टेंसेस के रूल याद रखना है. प्रपोजिशंस इंपॉर्टेंट है. जो लोग लॉ एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए प्रपोजिशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, ठीक है, चलिए ग्रेट. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों. ठीक है, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट. ओके, ठीक है, so we took 15 minutes to talk about cryptocurrency. We took 10 minutes to give you an explanation about the framework. I have talked about this framework in my last 4 sessions also. ठीक है, so make sure that you follow this framework. ठीक है, I want to, you can say, drill this idea in your mind that grammar is manageable. ठीक है, grammar requires certain frameworks and you have to follow that framework. That's it. And I'm sure you are going to be, you can say, short successful person in your entrance examination. Believe me, you will be master at, you can say this grammar once you follow certain rules. It is easy for everyone. Yes, let's start with this first thing. Subject verb agreement means that the subject and the verb which are used, they should agree. If the subject is singular, the verb has to be singular. If the subject is second person, then the verb has to be always used as are. Okay, we all know that I के साथ am आता है, you के साथ are आता है, he, she, it के साथ is आता है. So that's very important. Okay, ठीक है. So the rule is very simple, but the conditions may create a lot of trouble to us. ठीक है, I'm going to give you rules and then I'm going to take a practice exercise, so that makes it easy and comfortable exercise for you. Okay, chaliye great. So there are certain exceptions to the certain rules, so we have to be very careful about it. Okay, so the big question is, how do we identify what is a subject? एग्जामिनेशन में सबसे बड़ी बात हो जाती है कि आपको सब्जेक्ट आइडेंटिफाई कैसे करना है. सो वी ऑल नो सब्जेक्ट इज अ डूअर, is a, you can say, agent of a particular action. ठीक है, so we all understand that idea. Okay, so for example, let me ask you, a banquet of 7 courses have been prepared for the president. ठीक है, now the subject is what? Whether the subject is 7 courses or a banquet, what is a subject? Is a 7 courses or a banquet? ठीक है, what is the subject? Please tell me. What is the subject? A banquet or 7 courses? क्या होना चाहिए? What is the subject here? So thereby we can decide have आएगा या has आएगा. ठीक है, what is the subject? Yes, Vaibhav, you are right. It is a banquet. You can say is the right thing. So a banquet of 7 courses has been. So of के पहले ज्यादातर जो होता है, that's a subject. Okay, that's a subject. Okay, I think that's pretty clear for you to identify. Let's start with the rules. You can start noting them down. Okay, keep it in your copy and make a write notes. This notes will be useful for you when you have to revise, possibly in the month of May when your examinations are going to come. Okay, you need this revision. Okay, I'm going to, you can say, make this, you can say, content available to you in your course. It is for sure, it will be available. ठीक है, पर दोस्तों वो अवेलेबल होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दिमाग में होना चाहिए. सो प्लीज मेरे साथ नोट लिखते चलिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, चलिए ग्रेट. ठीक है, देखते हैं पहला, व्हाट इज अ रूल? वेरी इजी रूल. सम ऑफ द रूल्स आर नोन टू यू. ठीक है, सम रूल्स आर कॉम्प्लेक्स. ओके, सो वॉट एवर इज द रूल, we have to give all our 100% attention to each and every rule. Even though we know it, we have to, we can say, read it, apply it, because it may be needed. Okay, it may look
very you can say simple for us कि भाई पता है, ठीक है, but when we you can say we are learning something, it turns out to be really important. Okay, ठीक है, चलिए, great. Mohammed or MB Short Star is asking, sir, please clarify YT live session schedule. Sure, I will let you know generally in advance. Okay, chali, great. Let's start with this. When two subjects are joined by and, the verb is plural because subject is plural. When we say my cousin and her mother, okay, so we are not talking about one single subject. We are talking about two. So thereby they become plural. Okay, very easy. Okay, very easy. When we are joining by and, okay, there is an exception here. Okay, when two singular nouns are joined by and, but it is referring to the same person, then it is singular. Okay, the CEO and manager has been arrested. That is the same person we are talking about. Okay, that's the same person we are talking about. The CEO and manager, we are talking about the same person. The vice chancellor and professor is on leave, not one, it is on leave today. Okay, so that's very important. So when I say the vice chancellor and professor, but when I say the vice chancellor and the professor, then I'm talking about two different people, then I have to use it as a plural form. When I say the CEO and the manager, then I'm talking about two different people. But when I say the CEO and manager, I'm referring to one. Is that okay? समझ में आ रहा है सबको? Easy है? Comfortable है? Very good. ठीक है? So that's an interesting front. Okay? ठीक है दोस्तों, ये समझिए, ये जो मैं क्लैरिटी आपको दे रहा हूं, ठीक है, बिलीव मी, यू विल नॉट फाइंड सच क्लैरिटी एट लॉट ऑफ प्लेसेस. ठीक है, लॉट ऑफ पीपल इन द एंट्रेंस प्रिपरेशन दे सिंपली से कि पता होगा बेटा तेरे को, है ना, तो कर ले, हम तेरे को क्वेश्चन दे देते, जंप कर ले. ऐसा नहीं होता भैया, देयर हैज टू बी प्रॉपर मेथड. सो वंस यू नो दिस नॉलेज, ठीक है, जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा, आपका प्रोसेसिंग बहुत तेज हो जाएगा, आपकी स्पीड बढ़ेगी. You have to crack exam like IIM, IPM, NPAT, symbiosis, ठीक है, or any law entrance examination. You need speed, but speed can happen once you know right knowledge. ठीक है, with the right knowledge, your processing improves. Is that okay? चलिए, बहुत अच्छी बात है. ठीक है, next rule. If two different singular nouns together express one idea, okay, then it is used as a singular form. For example, bread and milk is a good breakfast. So here we are talking about bread and milk is one dish. ठीक है, rice and curry is my favorite dish. So we are talking about rice and curry is one dish. That's what we are talking about. Rule number 4, when two singular subjects are practically synonymous, ठीक है, they actually talk about one and the same thing, then you are using singular. For example, the law and order situation in the country is under control. That is called law and order situation. So currently in Bihar, law and order situation with respect to railway is not well. It is not good. Students of Bihar are creating lot of trouble to we can say the properties of railways. So there the law and order situation is not good. Law and order is one singular. Okay. His power and influence is on decline. ठीक है, so his power and influence, ठीक है, his power and influence refers to only one single compound noun की तरीके से काम हो रहा है. I hope it is very clear. Great. Rule number 5. I'm sure you are writing this. Yes or no? I must not remind you that you should write it. Okay, you must write each and everything mentioned here. Okay. Another rule. When periods of time, distances, amounts of money, they are considered as one unit, we always use as a singular form. So for example, marathon is a 22 kilometer is making a marathon. ठीक है, so 22 kilometers is a singular. ठीक है, 20 rupees is enough for a ticket, even though you look at it as a plural rupees. ठीक है, but you are referring to as one unit. Okay, so that's a simple thing. Whenever we talk about collective noun like audience, crowd, jury, team, committee, okay, they are known as collective noun and they
enjoy singular verb because they are together one. They are together one. ठीक है. The audience is enjoying the show. Yes or no? The audience is enjoying the show. The audience, ठीक है, is enjoying today's class. Yes or no? So that is called the audience. The crowd were getting impatient with delay. Now is this right? The crowd were getting impatient or crowd is getting impatient with delay. ठीक है. So when we talk about crowd, okay, so here we are talking about the members of crowd, not the entire crowd. Okay, we are talking about members of crowd. Some members of the crowd are becoming impatient. So here we are using were, that is right. Okay, ठीक है. For example, the jury has, you can say, reached a decision. ठीक है. Then I am using collective noun, together they are one. When I say the jury are at odds with each other, then I say that the jury members, that's what I'm talking about. The jury members are at odds with each other. That's what I'm talking about. This is how the idea is. So you have to see collective noun is used as one or collective noun is used as a plural form. ठीक है. So that's what we have to understand. ठीक है. If two singular subjects combined by and are preceded by each or every, then we are talking about it's a singular. Every boy and girl was present in the class yesterday. Every boy. ठीक है. Remember, this is important. Okay. Every, each, है ना, very important rule. All of you are writing this, say yes or no. All of you are able to understand this, say yes or no. This is crucial. Okay. If two singular subjects are preceded by each and every, then we are talking about a verb which is singular. Okay. Very simple. Now when subjects are joined by either or neither nor, ठीक है, and we are talking about two different people, then remember the verb has to be used which is nearest to the subject. Nearest to the subject. Nearest to the subject. For example, when we talk about either Ramesh or Suresh has done this mischief, या तो रमेश ने किया या सुरेश ने किया, so that is one of them. Yes or no? Not both of them. ठीक है. So we are saying either Ramesh or Suresh has done this mischief. So what is the subject? Suresh. So that's the last subject. So we use has. Either prime minister or cabinet ministers. ठीक है. So we talk about cabinet ministers. ठीक है. So R होना चाहिए. Is this clear? It has to be R. Either prime minister or cabinet. So cabinet minister क्या था? Plural था. So therefore the word is R. ठीक है. Either you or I am responsible. So आखिरी में क्या आया? M. So sorry, आखिरी में आया I, and therefore M should be there. Is that okay? Is this clear to everyone? सबको बात समझ में आ रही है? Very good. चलिए आगे बढ़ते हैं. Rule number 9. ठीक है. If we are talking about the word like with, together with, or as well as, or accompanied by, ठीक है. So we are combining one or more, you can say, subjects. ठीक है. The verb agrees with the subject mentioned first. जो सबसे पहले मेंशन हुआ है उसके साथ अग्री करेगा. The prime minister together with his cabinet minister is invited to the function. Who is invited? Prime minister together with his cabinet minister. तो भी आप क्या यूज करोगे? is, क्योंकि सब्जेक्ट कौन है आपका? प्राइम मिनिस्टर. दैट्स अ सिंगुलर, यू यूज is. ठीक है. रमेश along with his parents visits the zoo. भाई रमेश अपने माता पिता के साथ यू कैन से जू विजिट करने गया, है ना. रमेश अपने माता पिता के साथ जू विजिट करने के लिए गया. ऐसा नहीं बोला कि रमेश अपने माता पिता के साथ जू विजिट करने के लिए गया. ओके, आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन. ग्रेट. ठीक है. सो दैट्स अ वेरी सिंपल रूल. मिस्टर निरंजन accompanied by wife and children is arriving tonight by train. Okay, so this is very important. Okay, this is very important. Is this comfortable? ठीक है. अगर मैंने यहाँ पे ऐसा बोला होता मिस्टर निरंजन accompanied नहीं लिखा होता और बोला होता and his wife and children, अगर मैं accompanied by की जगह पे या together with की जगह पे and बोलता तो मैं क्या यूज करता?
आर यूज करता, ये सब नो, ये मिक्स मत करना, आगे सिखाया था यहाँ पे कुछ गलत नहीं भैया, आगे पार्ट पीछे सपाट मत करना, ये सब नो, पढ़ाई करो, चीजों को कनेक्ट करो, और जो जो भी छोटी छोटी चीजें डिफरेंस क्रिएट हो रहा है उसको दिमाग में डालो, समझदार बच्चे अच्छी तरीके से काम कर पाएंगे। इज दिस कंफर्टेबल? यस, ठीक है। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट व्हेन, not only but also is used to combine two subject, verb will always agree with the subject closest to it. Not only he but all his brothers also. बात क्या हो रही थी? his brothers सिंगुलर होगा, प्लूरल होगा, प्लूरल होगा तो आंसर होगा वर। क्लियर है? इज दिस वेरी क्लियर? वेरी गुड, आंसर होगा इसका दिस। रूल नंबर 11, the use of a number of, the number of, observe two different structure। ध्यान से देखिए, बहुत मजेदार है, ठीक है। ध्यान से देखिए इस पर्टिकुलर रूल को जो आपके लिए कहानी बदलेगा, है ना। जैसे वो बोलते हैं ना, ध्यान से देखिए इस आदमी को, है ना, वैसे वाला कुछ बोलने की जरूरत पड़ रही है मुझे, है ना। ध्यान से देखिए, पहला स्ट्रक्चर, अ नंबर ऑफ, प्लूरल नाउन आएगा, ठीक है, तो प्लूरल वर्ब आएगा, विच मीन्स अ नंबर इज ऑलवेज कनेक्टिंग विद द प्लूरल वर्ब। द नंबर इज अ सिंगुलर वर्ब, ठीक है। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गोइंग टू द यू कैन से क्लास पिकनिक, चलेगा। द नंबर ऑफ डेज इन द वीक इज 7, सो द नंबर इज सिंगुलर, अ नंबर इज प्लूरल। इज दैट वेरी क्लियर? आर यू नोटिंग दिस डाउन? ठीक है, आर यू नोटिंग दिस डाउन? आर यू गेनिंग दिस नॉलेज? वेरी इंपॉर्टेंट नॉलेज, ठीक है, मिस ना करें इस बात को। ओके, अ नंबर, द नंबर, अ नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैव ऑलरेडी बीन इंटरव्यूड, ठीक है, वेरी गुड। द नंबर ऑफ रेसिडेंट्स हु हैव बीन रिसाइडिंग इन दिस कॉलोनी इज क्वाइट स्मॉल। इज दैट इजी? कंफर्टेबल है सबको? सब समझ में आ रहा है? से यस और नो? वी हैव सीन सो फार 11 रूल्स, ठीक है। आपको कोई भी रूल में दिक्कत हो तो आप मुझे बताइएगा। ओके, अगला रूल है a lot of, a majority of, a great deal of, plenty of, most of, some of, they refer to number, ठीक है, then it's a plural। a lot of people were present, some of the employees were absent, ठीक है, ये ध्यान रखना when they are talking about a number। okay, अब हम देखते हैं when a lot of, a majority of, a great deal, ठीक है, और some portion, ठीक है, they refer to the portion of it, they refer to a portion of it, ठीक है। okay, then it is noun। a lot of pie has been eaten, हम बात करें एक ग्रुप का पार्ट, most of the pies were eaten, so you are talking about pies here, तो वो प्लूरल होगा, pie है तो सिंगुलर है। a lot of pie has been eaten, ठीक है। I hope it is very clear, सबको ये रूल समझ में आया? It is interesting to note that look, such kind of rules are going to change your, you can say, career। okay, if you are going to remember these rules, you are going to apply these rules, believe me, you are going to gain lot of advantage। clear है? very good। number 13, barracks, headquarters, whereabouts, arms, ठीक है, they always used, you can say as, you can say as, जैसे news हमेशा प्लूरल यूज होता है वैसे ही लगता है, ठीक है। ओके, सो दे टेक अ सिंगुलर वर्ब एज वेल एज प्लूरल वर्ब। सो व्हेन यू टॉक अबाउट द हेडक्वार्टर्स ऑफ EFL यूनिवर्सिटीज इज इन हैदराबाद, सो दैट्स एक्सेप्टेबल, ठीक है। आप बात कर रहे थे एक ही चीज के बारे में, बट व्हेन यू टॉक अबाउट, यू कैन से देयर आर सो मेनी बैरक्स आर kept by Indian Army, so when you are talking about so many barracks, ठीक है, तो प्लूरल है, ठीक है। यू आर टॉकिंग अबाउट बैरक्स, ठीक है, तो दैट्स अ सिंगुलर, बट द वर्ड इज ऑलवेज यूज्ड एज एस। ओके, ठीक है। इन स्पोर्ट्स व्हेन वी आर रिफरिंग टू प्लेयर्स और अ टीम, ठीक है, जनरली इट इज फॉलोड बाय प्लूरल वर्ब। सो इंडिया हैव वन द वर्ल्ड कप, सो वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया प्लेयर, द प्लेयर ऑफ इंडिया, है ना। द टीम हैव वन इट, मतलब टीम हैज, अगर मैं बोलता हूं टीम has won it, I'm talking about one team। okay, when I talk about India have won it, I'm talking about the players of India have won it, that is what I'm talking about। is this comfortable? समझ में आ रहा है सबको? great, ठीक है। when the word enemy is used in the sense of armed forces of a nation,
with which of our country is at war, we have to use plural verb. The enemy were forced to retreat. ये रूल हमेशा याद रखना है ना, जब भी आप एनिमी के बारे में बात कर रहे हो एंड यू आर रेफरिंग टू एनिमी, ठीक है, जिसके बारे में आप बोलो कि हमारे देश का एनिमी है, ठीक है, उसके साथ आप वॉर पे हो, तो भैया वो वर यूज होगा. ओके, ठीक है, चलिए, ग्रेट. आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल दिस रूल्स, लेट्स स्टार्ट विथ दिस क्वेश्चंस. ठीक है, जल्दी फटाफट बताइए. 15 माइल्स, ठीक है, यहां पे आना चाहिए इज और आर अ लॉन्ग वे टू वॉक. ठीक है, ओ सॉरी मैंने गलती कर दी. ठीक है, इस पार्ट में से एरर क्या है बताइए. क्वेश्चन नंबर 1 में एरर क्या है बताइए. 15 माइल्स आर अ लॉन्ग वे टू वॉक. क्या आंसर है? वेरी गुड. आंसर क्या आना चाहिए? इज. 50 माइल्स इज अ लॉन्ग वे टू वॉक. वेरी गुड, चलिए, बहुत अच्छी बात है. नंबर 2, नीदर माई ब्रदर नॉर माई ब्रदर इन लॉ वर एबल टू हेल्प मी इन माई वर्क. व्हाट इज द एरर? व्हाट इज द एरर? जल्दी, स्पीड में. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द एरर? जानवी सेज आंसर इज सी. यस, क्या होना चाहिए? नीदर माई ब्रदर नॉर माई ब्रदर इन लॉ. नीदर नॉर में रूल बोलता है जो आपका लास्ट सब्जेक्ट है उसके मुताबिक ये चलेगा. सो वर्क की जगह पे क्या आना चाहिए था? वॉज. यस और नो? चलिए, वेरी गुड. ठीक है, नीदर इंडिया नॉर श्रीलंका हैव येट एक्वायर्ड द कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर वेपन्स. क्या होना चाहिए? व्हाट इज रॉन्ग इन इट? Neither India nor Sri Lanka have yet acquired the capability to produce nuclear weapon. Okay? People have started giving the answer. B. Neither India nor Sri Lanka has yet acquired. We are referring to country. Country is used as a singular. Comfortable है? Very good. ठीक है. Number 4. Every man, woman and child are now aware of the adverse effects of the habits of smoking. What is wrong in this? Or is that no error in it? Please tell me. What is the answer? Okay, people started to give the answer. Every man, woman and child is now aware. Is आना चाहिए था, आर नहीं चलेगा. वेरी गुड. Meatless days have been made into a film. What is the wrong in it? Tell me what is wrong in this. Meatless days have been made into a film. Okay, answer is B. आना चाहिए था has been made because meatless days is one, possibly a book we are talking about, or a play, or some object we are talking about. Therefore answer is this, A. Neither he nor his brother-in-law is interested in joining the party. क्या आ रहा है इसमें? Neither he nor his brother-in-law is interested in joining the party. Okay, Ishita says answer is E. Every one of you are saying answer is E. Wonderful. Answer is E. There is no error. Okay, I hope it is very clear to everyone. चलिए, बहुत अच्छी बात है दोस्तों. आज एक तगड़ा मॉड्यूल हमने देखा विच इज नोन एज अगेन से सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट. ग्रामर का एक महत्वपूर्ण पार्ट सीखा. आई एम गोइंग टू गिव यू दिस पीडीएफ इन योर कोर्स. दिस पीडीएफ विल ऑल्सो कंटेन some additional practice questions. ठीक है, so whatever you have learned in today with respect to rules, apply those in those, you can say, questions and master yourself, upgrade yourself with respect to your knowledge and ensure कि ग्रामर में सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट आया, हमारी 1 रुपए की गलती नहीं होगी. Yes or no? We are going to get all of them right. Okay, चलिए, great.
So with this, I'm closing this module. Thank you very much for watching this. ठीक है, and don't miss out to, you can say, subscribe to our channel, put that bell icon so that whenever there is a new video comes to you, you immediately knows it. Okay, thank you, have a good day.